हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में खास करके सिस्को डेवऑप्स डाटा ब्रिज के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं फोक्स। और उसके साथ साथ जो भी वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियोस है, जैसे कि हो गया हमारा डिफरेंट सॉर्ट ऑफ साइबर अटैक्स या फिर जो भी हो रहा है राइट इन द प्रेजेंट सिनेरियोस में, उन सभी के बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर अगर आप इस वीडियो लेक्चर में नए हो, सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, so I personally request you to please do a subscription to this channel, like the channel, share the channel as soon as possible for getting the latest update regarding any cyber affairs that is all about educational purpose only. तो चलिए शुरू करते हैं रिगार्डिंग द सिस्को डाटाबेस। तो सिस्को ने कंफर्म किया है कि सिस्को डेवऑप्स डाटाबेस के बारे में। सो सिस्को डेवऑप्स पोर्टल जो कि है हैज टेकन ऑफलाइन। ठीक है, क्यों ऑफलाइन चला गया, क्यों इंटरनेट कनेक्टेड से दूर चला गया, वो ही बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है या फिर बहुत ही बड़ा मैटर होता है राइट। सो वाई बिकॉज जैसे कि हम जब तक हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी से हमारा डिवाइस अलग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली द डाटा ब्रीच इज गोइंग टू हैपन मच मोर। ठीक है, या फिर गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो भी होता है राइट, तो उसको गैदर करने के लिए हैकर्स को उसको मिल जाएगा राइट। सो बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू इंटरनेट, they have the access to that. So that's the reason why we have to disconnect the internet from the devices. That's the reason why Cisco has taken it to offline. Okay, which portal? It's DevOps portal. Okay, so after a hacker stolen, okay, leaked the stolen data. ठीक है, so this incident, जैसे कि इस इंसिडेंट जो है वो हाईलाइट हो गया एक मेजर साइबर सिक्योरिटी चैलेंज जो कि टेक कंपनीज में बेसिकली फेस होने वाला है, क्योंकि सिस्को इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रोल प्लेयर। ओके, प्रोमिनेंट रोल प्लेयर इन द सेंस इट मैं क्या करता है, इट बेसिकली हैंडल्स ऑल द नेटवर्किंग ऑपरेशन इन ईच एंड एवरी कंपनी। ओके, जो भी राउटर्स या फिर जो भी स्विचेस या फिर जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं राइट, विच रेफरेंस टू नेटवर्किंग, सो दैट ऑल प्रोडक्ट्स आर बिलोंगिंग टू सिस्को। तो सिस्को में बेसिकली क्या हुआ है कि डेवऑप्स का डाटा ब्रीच हुआ है राइट। सो दैट्स द मेन कंसेप्ट ऑफ आवर डिस्कशन एंड आई होप you will definitely enjoy the session folks. Why? Because the things which I am going to display, the things which I am going to explain you, it's much more interesting right. So that's the reason why we are going to discuss about that, and I hope you will definitely enjoy. So if you're new, please do a subscription to this channel, like the channel, share the channel as soon as possible for getting the latest update regarding any cyber affairs. Okay, सो तीसरा आता है फोक्स हमारा मेन कंसेप्ट ऑफ डिस्कशन। इट इज ऑल अबाउट इनिशियल अटैक वेक्टर। ठीक है, हम जो भी पढ़ाई किए थे राइट, जो भी डिस्कस किए थे जो कि डेवॉप में ब्रीच हो गया, तो फिर वो इनिशियल वेक्टर्स क्या क्या होता है, या फिर एक अटैकर जो होता है, एक थ्रेट एक्टर जो होता है, एक एडवर्सरी जो होता है, वो एक्चुअली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग क्या क्या करने लगता है, किस तरह इंफॉर्मेशन को गैदर करने लगता है, किस तरह लूप होल को फाउंड करने लगता है। दैट्स मेक्स द वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट फोक्स। ठीक है, तो उसी लिए या फिर इसी के अंतर्गत जो होता है राइट, तो उसी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। सो दैट्स द मेन इंटेंशन व्हाई आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इनिशियल अटैक वेक्टर। तो वन इज क्रेडेंशियल थेफ्ट, सेकंड इज एक्सप्लॉइटिंग द वल्नरेबिलिटी, थर्ड इज फिशिंग कैंपेन। सो दीज आर द थ्री prominent points which basically the initial attack vector plays a important very important role. तो इनिशियल अटैक वेक्टर में तीन पॉइंट वेरी बहुत ही बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो क्रेडेंशियल थेफ्ट में जैसे कि होता है हमारा अटैकर जो कि है गेन करने लगता है इनिशियल एक्सेस को बाय स्टीलिंग एम्प्लॉयज क्रेडेंशियल। ठीक है, तो दूसरा में एक्सप्लॉइटिंग, तो जैसे कि हो गया मे बी स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग ए जीरो डे वल्नरेबिलिटी इन द डेवऑप्स पोर्टल। ओके, दे मे स्टार्ट। ओके, तो दूसरा स्लाइड में हम बहुत ही डिटेल तरह या फिर डिटेल पढ़ाई करेंगे इसमें सिनेरियो क्या हुआ है राइट। सो इन द नेक्स्ट टू स्लाइड्स, तो फिशिंग कैंपेन, तो डेफिनेटली फिशिंग कैंपेन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कैंपेन। ठीक है, एम्प्लॉयज को टारगेट करने के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयज अकाउंट को जो कि क्रेडेंशियल को हार्वेस्ट करने लगता है, क्रेडेंशियल को लूप करने लगते हैं या फिर क्रेडेंशियल को टेक करने लगते हैं राइट। सो दैट्स द मेन इंटेंशन ऑफ दिस स्लाइड व्हिच आई हैव बीन प्लेसिंग इन द थर्ड। ओके, सो इनिशियल अटैक वेक्टर। ठीक है, सो next, going to the next slide, it is discussing about the most prominent points, that is all about the Cisco, which basically confirmed today that it took its public DevOps portal offline। क्यों डेवऑप प्लॉटलाइन ऑफलाइन लिया, क्योंकि थ्रीट एक्टर जो कि एडवर्सरी जो है नॉन पब्लिक डाटा, बट इट कंटिन्यूज टू स्टेट दैट देयर इज नो एविडेंस दैट द सिस्टम आर ब्रीच। ठीक है, अब तक एविडेंस नहीं आया है कि वो सिस्टम ब्रीच हुआ है। ठीक है, so we have determined, ठीक है, Cisco have already determined the data is in question is on public facing DevOps hub।
ओके, डेव हब में जो बेसिकली हुआ है राइट, एनवायरनमेंट में ए सिस्को रिसोर्स सेंटर दैट enables us to support our community by making available software codes, scripts, extra for customer to use in as needed. Okay, so reads as updated statement from the Cisco. As this stage is in our investigation, we have determined that a small number of files, this is small, very minimal number of files that were not authorized, ठीक है, वो authorized नहीं हुआ है for public downloaded. Okay, for public downloads may be, okay, may have been published. Okay, so Cisco says that there are no indication, अभी तक तो इंडिकेशन कुछ नहीं आया that personal information or financial data was stolen, but is continuing to investigate what data have been accessed, कौन सा डाटा एक्सेस बेसिकली हुआ है. सो दिस स्टेटमेंट कम्स आफ्टर ए थ्री टैक्टर, जो कि थ्री टैक्टर knows as intel broker, ठीक है, claims to have breached Cisco and attempts to steal data and source code stolen from the company. Okay, so this is the evidence which has been given by the Cisco. ठीक है, अभी तक जो एविडेंसेस दिया है सिस्को ने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में, बहुत ही मिनिमल फाइल या फिर स्क्रिप्ट जो भी हुआ है उसका इंटरफेस में, पब्लिक इंटरफेस में वो लीक हुआ है बोल के आया है. ठीक है, तो एज पर द स्पोक पर्सन इंटेल ब्रोक अबाउट द इंटेल अबाउट द अलाइन ब्रिज. ओके, सो हु सेड गेन एक्सेस टू सिस्को थर्ड पार्टी डेवलपर एनवायरनमेंट. ठीक है, जो थर्ड पार्टी डेवलपर एनवायरनमेंट को उसको गेन करके एपीआई टोकन एक्सपोज करके, ठीक है, थ्रू एन एपीआई टोकन, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस टोकन को एक्सट्रैक्ट करके. सो एज पर द Cisco's investigation, okay, Intel broker grew increasingly frustrated when the companies would have not acknowledged the security incident, sharing screenshot with the with different sort of threat intels, okay, to prove that he has gained access to Cisco's developer environment. Again, I read during Cisco's investigation, okay, Intel broker grew increasing frustrated when the company would not acknowledge the security incident. जब तक security incident माना भी नहीं, ठीक है, तो जब तक हुआ है उनको उनको पता भी नहीं है. ठीक है, so this is the main motto. So उसके बाद जो screenshot भेजा है राइट, so these screenshot and files, okay, which were also shared with Cisco, shows that the three tactor have access to most, if not all, ठीक है, access to most, okay, data that is been stored in the portal. okay, जो डाटा इंक्लूड करता है सोर्स कोड को, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को, डाटाबेस क्रेडेंशियल्स को, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन एसक्यूएल फाइल्स भी उसमें शामिल है. सो अंडर द customer data and stored on the server and none of shared with us. Okay, so Intel broker further claimed to have continued access until today. Okay, so when Cisco blocked all the access to the portal and the compromised JFrog developer environment. Okay, so the threat actor also said he lost access to the Maven and Docker server related to the Dev Hub portal, but did not said any proof of said access. ठीक है, अभी तक वो कंफर्म भी नहीं किया. When, okay, जब पूछा गया right, he attempted the extra Cisco not to publish stolen data. Intel broker said it is not trying. Okay, he did not try as they would likely not trusted him to keep this word. Okay, so this is all about the कम्युनिकेशन विद द सिस्को एंड द रिलेटेड पर्सन. ठीक है, तो उसके बाद अगर देखें तो डाटा एक्सफिल्ट्रेशन. तो डाटा एक्सफिल्ट्रेशन में बेसिकली हमारा होता है जो भी एक्सेस हुआ है या फिर जो भी आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ है या फिर जो भी इनिशियल एक्सेस जो भी ब्रीच हुआ है, एक्सफिल्ट्रेशन हुआ है राइट. सो एक्सफिल्ट्रेशन में बेसिकली तीन होता है. वन इज एक्सेस, आइडेंटिटी एंड एक्सट्रैक्शन. तो अटैकर गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द डेवऑप्स पोर्टल, सेंसिटिव डाटा वर आइडेंटिफाइड एंड टारगेटेड, data was copied and from outside the domain. Okay, तो सिस्को रिस्पॉन्स बेसिकली क्या है, ऑफलाइन चला गया, इन्वेस्टिगेशन, रेमिडिएशन, तीन स्टेप वो फॉलो किया है. तो जब जब वो हुआ है राइट, सो सिस्को टुक डेवऑप्स ऑफलाइन टू कंटेन द ब्रीच. उसके बाद दे लॉन्च एन इंटरनल इन्वेस्टिगेशन टू डिटरमाइन द स्कोप्स एंड थ्री स्टार रेमिडिएशन. तो सिस्को मेजर्स वेर इम्प्लीमेंटेड टू प्रिवेंट फर्दर such sort of incidents. Okay, तो उसके बाद इम्पैक्ट्स ऑन द डेवलपर. तो इम्पैक्ट्स ऑन द डेवलपर बेसिकली क्या होता है, इम्पैक्ट्स क्यों होता है, जैसे कि हमारा डिस्ट्रप्टेड एक्सेस,
प्रोजेक्ट डिले एंड रेपुटेशनल डैमेज। ये तीन तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है फोक्स, ठीक है, हर एक डेवलपर्स को, ठीक है। तो इन डिटेल आपको इसमें एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द टूल्स, द क्रिटिकलिटी ऑफ द टूल, द रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज, ठीक है, वो उसमें मैनेज हुआ है। प्रोजेक्ट डिले तो डेफिनेटली होगा क्योंकि ऑनगोइंग ऑफलाइन चला गया, ठीक है, ऑनगोइंग एक्टिविटी सब कुछ ऑफलाइन चला गया। Reputational damage is all about Cisco's developer, that basically the reputation is going to damage, okay। So जब हम डिस्कस करेंगे हमारा सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस, जब सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस में बेसिकली हमारा होता है स्ट्रांग पासवर्ड, मल्टी फैक्टर एंड रेगुलर अपडेट्स। ये तीन बहुत ही ज्यादा मात्रा में एक सिक्योरिटी एनालिस्ट को बेसिकली परफॉर्म करना है। स्ट्रांग पासवर्ड को मेंटेन करना है, ठीक है, यूनिक पासवर्ड टू ऑल द अकाउंट्स, एमएफए का एनेबल रहना है जो कि एक्स्ट्रा लेयर प्रोटेक्शन फॉलो करता है, ठीक है, रेगुलर अपडेट्स रखना चाहिए, वल्नरेबिलिटीज को पैच करते रहना चाहिए। तीसरा हमारा आएगा लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन। तो पहला है इंक्रीज सिक्योरिटी, रेपुटेशनल डैमेज, इंप्रूव सिक्योरिटी। सो लॉन्ग टर्म रेपुटेशन में बेसिकली ये तीन हम अगर फॉलो करेंगे, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गिव ए बेस्ट प्रैक्टिस, सिक्योरिटी प्रैक्टिस टू एनी ऑफ द environment which we have been working on, right? So that's plays a very crucial and important role, folks, right? So in the field of cyber security, okay, so whenever you are going to have your wars, whenever you are going to have your perfection, okay, so that's plays a very crucial and important role, okay, that's comes under the long term implication. So lesson learned is all about proactive security, instant response and transparency। अगर ये तीन रहेगा तो definitely we are going to give the best of our abilities, okay। So investigating is investigate in robust security crucial, okay, effective incident response plan to, and last and final one है ओपन कम्युनिकेशन, जो भी है ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए, राइट। सो दैट्स प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल, फोक्स, ठीक है। सो दीज आर द लेसन विच बेसिकली लर्न फ्रॉम द incident, okay। So I hope you have enjoyed the session, folks, and till then thanks for giving your precious time. If you have watched till the end, then really thankful. Please do a subscription and like the channel as soon as possible.